वो एक जूम पे भेजा, एक बार चेक करो. कैन आर यू एबल टू ज्वाइन दैट लिंक? एनीवन? वॉइस इज ऑडिबल? ठीक है, कनेक्टेड है. स्लाइड्स दिख रही है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एबल टू हियर प्रॉपर्ली नाउ? Omkar, able to hear me? Online students able to hear me now? Yes, sir. Okay. Okay. Now, moving further. So moving further, the next aspect that you need to check is security type. Okay. So if it is a matured bond, of course, already, it cannot be in the system, right? You need to have a very fresh bond that is issued for today with a future maturity date. It cannot be an expired warrant. Okay, warrant is of course more of a type of which security? इस सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं है. Warrant, debt security. No one has any idea. Just write one assignment there. What is warrant? Okay. वो पुलिस वाला नहीं है warrant. This is different. So of course you need to make sure that any particular instrument or security which we are having in the system will need to have fixed maturity period. It should not be expired. It should not be already in the system, like predefined in the system by someone else. Double entry भी नहीं हो जाना चाहिए. Say for example, if while you are entering the data into the system, someone should not have entered the entry of the same security in the system earlier. Okay, so all these are data checks that you need to perform. Of course, it might happen that some of the processes will be automated, some of the processes will be you have to do manually. Okay. Then comes the price as well as the counterparty. So price must be expressed according to the security group. Share price must be an amount per share, and bond price must be either a percentage relevant to face value or a yield. So basically, what is the yield rate provided by that bond? You need to write it 8% or 10% or 12%. If it is a share, you need to mention the current market price or the price at which the transaction has been executed. And if it is a foreign security, you need to mention the currency as well: dollars, yens, euros, whatever it is there, right? Counterparty name must be clearly distinguishable from any other counterparty, and it should also include the location, because what will happen is JP Morgan might be present in different locations: India, US, UK, in any other European countries, but you need to mention from which particular branch of JP Morgan you have carried out the transaction. So you will need to include either the PIN code or any other postal code or any other address, as well as any other instructions pertaining to that counterparty. Then comes the trade validation factors. So price must be quantity, the average, the total quantity that you have mentioned into the price. Price will be current market price, or which one? Another one. Which price will be there? या तो करंट मार्केट प्राइस हो सकती है, या तो फिर फिक्स प्राइस क्या होता है? ट्रेडेड प्राइस. ठीक है, जिस डील के साथ आपने जो प्राइस फिक्स किया हुआ है, that will be the price that you will be entering into the system, plus or minus any other cost such as stamp duty if it is relevant. Okay, so basically we do include over here stamp duty. Okay,
security transaction charges we are taking it. Then of course we have which type of taxes? We have discussed 4 type of taxes, right? Huh? Long term, yeah, that is capital gain. Long term, short term, so that is fine. Capital gains tax, then GST, then income tax, and last one is security transaction tax. So 4 types of different charges or taxes that you are going to incur while carrying out a transaction over here. Accrued days must be relevant to the last coupon payment date and the value date of the trade. So accrued days, of course, you need to calculate from the issuing date to the expiry date, and of course, the day count convention will come into picture over here. How many types of day count conventions were there? For which one? $30 by 360. Okay. Actual by 365. Accrued interest must be relevant to the quantity, accrued days, coupon rate, and annual divisor. So basically, accrued interest will be calculated based on the quantity of shares or quantity of the bonds or whatever you have. Accrued days is the total time frame between the issuing date and the maturity date. Coupon rate will be the interest rate or the coupon payment which will be provided to you, and annual divisor is basically the day count convention. Divisor can be 360 or divisor can be 365, right? So just write the last line. In the trade validation factor, accrued interest must be relevant to these 4 things or 4 parameters. Anyone tracking markets? हैबिट निकल गया वापस, लेवल 2 स्टार्ट हो गया। तो बस देखा बैंक निफ्टी में कैसा ट्रैक किया सुबह सुबह पुट राइटर्स को, गैप अप ओपन करके डायरेक्टली माइनस, ठीक है। 300-400 पॉइंट ऐसे ही सब ट्रैप। यस्टरडे जिन्होंने लॉन्ग किया था क्लोजिंग टाइम पे, अर्लियर सोचा होगा कि अच्छा आज ओपन हुआ है गैप अप तो प्रॉफिट हो जाएगा, बाद में एवरीथिंग इज माइनस ना। Still some of the this stocks are running very good। इलेक्ट्रिक वाले मतलब जितने भी है ना इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, या तो उनका रॉ मटेरियल है या उनका खुद का प्रोडक्ट है या तो फिर
लॉन्च करने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह वगैरह. Okay, I think today just one in my radar it has come. Just you can track if anyone wants to. There is one SW Elect Energy. SW Elect Energy. Okay. And second one is Genus Power. GENUS. Genus Power. SW Elect Energy was traded at around 100 or something levels like 1 year before. Today it is almost 400. जितने भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट वाले हैं ना, मतलब आई थिंक द डिकेड हैज टू बी देयर्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी जो 90,000 पे भी बिक रहा है ना, मुझे लग रहा है कि वो 1.5 लाख ना पहुंच जाए. ऑल ऑफ अ सडन डिमांड आया, क्योंकि अपना तो ऐसा ही इंडिया में एक बार घुसा सब लोगों ने तो फिर मार्केट ही क्रैश कर. बट विच प्रोडक्ट? ओके ओके, इलेक्ट्रिक कार्स. बट वो तो अच्छा, okay, but I think that even this city bus is also running in electric, right? Few of the electric, तो फिर उनका भी तो कुछ टेक्नोलॉजी रहेगा, अदरवाइज जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ कैपेसिटी इट विल रिक्वायर. तो साइज देखो, ऊपर से इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं एंड फ्रिक्वेंटली. ऐसा भी नहीं है कि आज एक ही ट्रिप है, कर एक ही ट्रिप है. तो हाँ, एसी है. हाँ यस यस, एसी भी है. तो जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ द बैटरी और कितना चार्ज करना पड़ता होगा. तो पावर स्टॉक्स तो आर ऑलरेडी गोइंग टू फायर. कोई भी पावर ले लो लॉन्ग टर्म. अदानी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. 1000 तक पहुंच जाए बहुत है, वहां से मैं बुक कर लेता अगर पहुंच जाता है तो. फिर उसको जहां पे भी जाना है जाओ, 2000 पे जाना है, 0 पे आना है, कुछ भी कर लो. हमारा वेल्थ अगर बन जाता है तो वी शुड एग्जिट. फिर ज्यादा ग्रीडीनेस रखने का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर ट्रैकिंग फ्रॉम 230 to 40 लेवल्स. Even if that is not the case, I think at 340 got once time corrected and again it has started its new journey from there. So whenever से जब उसने यूटर्न लिया पूरा, तो एट दैट टाइम आई रियलाइज अच्छा ओके नाउ अब ये लोग कैसे भी करके उसको पहले 1000 तक पहुंचा ही देंगे. ठीक है, बाद में जो उसका होगा देखा जाएगा. बट सी अदरवाइज देयर अदर स्टॉक्स आल्सो. इफ यू चेक फॉर अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन, स्टिल आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वो कंपनी काम क्या करती है. थोड़ा बहुत विंड मिल्स वगैरह वो है, दे हैव इन्वेस्टेड इनटू, और वो भी सब्सिडियरी इन द सेंस अगर सुजलोन का विंड मिल्स है तो उन्होंने वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है. ठीक है, बट बेसिकली ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए ना. अब विंड एनर्जी इज द ओनली सोर्स दे हैव सो फार इन्वेस्टेड. हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, अब जब चालू होगा प्लांट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग जो भी पावर उससे होगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट आई डोंट नो व्हेन दैट विल स्टार्ट, व्हेन दैट विल कंफर्म. विलमार्क का एक अच्छा है कि अच्छा प्रोडक्ट है, एडिबल ऑयल इज द प्रोडक्ट. बट अगर प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में, हाउ आर वी आर गोइंग टू स्पेकुलेट ऑन दैट. ओके, चलो नेक्स्ट. Trades due to settle on free of payment basis. So as extreme caution will be required, needs to be taken when you are settling the trade on FOP. Free of payment हमने last time देखा था. The amount will still not be getting into the books of accounts or even in the final settlement account, but you need to transfer the shares. तो अगर ऐसा ना हो जाए, for example, you have transferred the shares already, and on the other hand, the amount that you were expecting that should be get deposited into your account, that particular account is still not reaching to your account. Okay, so you need to be extremely careful. Otherwise, what will happen is there will be fraud. You have already transferred the shares, but you didn't receive the payment. So STO is the security trading organizations may be required, for example, to deliver the securities to the counterparty prior to the receipt of the cash. In the case of if it is an FPO, if it is a FOP. But if it is not an FOP, of course, you need to make sure that all the amounts get settled, and on the other hand, you need to transfer the shares. Now, if it is trading with a cash value, in order for the STO to give specific focus to all the trades that it deems to be large or larger than the average size, all the trades with a net settlement value of that figure or the currency valuation should be held for validation.
So say for example, if there is a particular size decided for every transaction, sometimes it might be already predefined in your automated system that if the amount of trade crosses a particular figure, say for example 1 CR or say for example 10 CR, it needs to be cross verified and validated at two ends, not only on the counterparty custodian side, but also at your end. You need to check that this is a very reliable counterparty, he is having credibility, he is having sufficient funds, and only then once he transfers the funds, we will be sending or transferring the shares to him. Okay, so sometimes you need to be very much careful in the case of a very large amount of transactions. Then third comes the trading with a specific counterparty. So STO will need to take special care of trades with a particular counterparty to ensure that the trade detail is correct before being communicated externally. This is likely to be required for trades with institutional clients, and which may be necessary because institutional client is new to the security trading organization. But because of an existing institutional client nature, you need not create a gap of any complaints for them. Okay, because they will be, see, this is more of like talking from the relational perspective. Does anyone has worked in the role of a like a relationship manager in the bank? No one? Have you just got that news of that Bharat Pay wala issue with the Kotak RM? Ashneer का वो जो audio viral हुआ था, Kotak Bank, he was the relationship manager, right? Okay, so what was that issue in that case? No one has heard that? Ashneer ordered for some shares, like he wanted No, to buy not some shares. He actually wanted to buy shares. shares in Huh? Nykaa, which he couldn't buy because of the issue with the relationship manager. So he said something to the manager, and then for the abusive language, he got back. Yeah. So basically what actually, see, relationship manager is that particular person who will be having a very strong relationship with his portfolio clients. Okay, so in every bank, say for example HDFC Bank, there will be one relationship manager and he will be handling a portfolio of 200 extreme customers. Now these customers are such whose bank balances would be minimum of 50 lakh or 1 crore or something like that. Okay, and they will be provided with all types of services, products, services to such an extent that even if you want to deposit the cash, that banker will be going to his house or office and collecting the cash, and he will be depositing in the bank. Such type of good relations are maintained. Why? Because the only perspective is that the client is helping the bank in terms of CASA. What is CASA? No product. Current account and savings account. Okay, so basically that is a banking transaction. Okay, so basically every bank has a target. Okay, that they need to achieve a particular target in terms of CASA, that is current account and saving account deposits. Okay, if it is a current account, of course the business transactions will be huge, and on that particular charges will be levied by the bank, which will be the pure business transaction. And if it is a saving account, if I am giving you 1 CR of deposits, of course the bank is going to then flourish in that case. So basically every this extreme customer will be having all their funds parked in one particular bank, for which he will be having this particular one RM with him. We will be providing all types of services. We will be making sure that all types of issues with respect to the given banking transactions are being solved. Okay. But what will sometimes happen is, now in the case of Ashneer, actually what happened was he actually was required, he had applied for some request that I needed 500 CR of funds to buy or apply for Nykaa IPO. Okay. नायका का आईपीओ तो पता है ना, नायका का आईपीओ जब आया था तो उसने बोला था कि मुझे 500 सीआर चाहिए, ठीक है, आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस. Now he was already being informed that you will be receiving 500 CR, whatever will be the terms and conditions and all those things, and everything was finalized. But problem ये हुआ कि वो 500 CR उसको मिला ही नहीं, and that is why he actually got into this rat fight with his RM. How can you just मतलब ऐसे डिनाई कैसे कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे. एंड ऑफ कोर्स इफ अगर वो 500 शेयर मिल जाता तो डेफिनेटली 500 शेयर उसको सामने ही मिलने वाले थे. नाउ इवन इफ ही इज पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 10 CR or 20 CR फ्रॉम दैट, देन नथिंग इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम दैट. व्हाई? बिकॉज नायका का लिस्ट जो हुआ 1100 से डायरेक्टली 2200 चला गया था, तो 500 CR का ऑटोमेटिकली कुड हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू अनदर 500 CR फॉर हिम. तो कोई भी मतलब किसी को भी गुस्सा आ सकता है यार, मेरे हाथ में से 500 CR चला जाए. So we can understand the psychology of that particular individual, right? But you need to make sure, see अब यहाँ पे आपके अगर institutional clients है, you need to be, क्या बोलते हैं, उसको कितना भी गुस्सा आ जाए, वो कितना भी कुछ बोल दे आपको, okay, but you have to be very much calm and patiently you need to handle that.
because he's your extreme or esteemed customers, you can say. And this is actually happening also in a real time world. Okay, ये होता है यहाँ पे. रीजन तो मुझे भी नहीं पता है, कुछ होगा इंटरनल ट्रांजेक्शन इशू या समथिंग लाइक दैट. बट क्यों नहीं मिला ये तो ठीक है, लेकिन अगर हाथ में से किसी के 500 CR चले जाए देन डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. बट हाँ, आपका रोल ये होगा कि आपके जितने भी एस्टीम कस्टमर्स है उनके साथ गुड रिलेशंस यू नीड टू बिल्ड. Only then the business will come from them, right? So this is more of a, like a sales perspective. But of course, if you are going to build good relations, he's going to give you referrals, take connections या networking में दूसरे clients आपके साथ आएंगे, transactions करेंगे, and only then you will grow, because your basic responsibility is not just for transaction processing. Okay, if you have seen in कोई भी banking में कोई किसी ने कुछ थोड़ा बहुत देखा है, काम किया है, anyone? No one? आपको कभी बैंक पे गए हो तो क्रॉस सेलिंग के लिए किसी ने अप्रोच नहीं किया क्या? क्रॉस सेलिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्रेडिट कार्ड ले लो, एफडी करवा दो, आरडी करवा दो, ये कर दो, वो कर दो. तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वेरी कैशियर आल्सो टिल द मैनेजरियल लेवल, एवरीवन इज हैविंग टारगेट्स. ओके, कैशियर होगा तो उसको भी टारगेट होगा, और ऊपर मैनेजर जो बैठा है तो उसको भी टारगेट होगा, राइट? सो इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट यू नीड टू मेक श्योर आपके भी टारगेट्स रहेंगे इन द केस इफ यू आर वर्किंग इन द मिडल ऑफिस. ओके, आपको सिर्फ ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का ही पर्सपेक्टिव नहीं देखना है. इट माइट हैपन दैट यू विल बी आस्क्ड दैट गो एंड हैव सम different types of instruments, either deposit with us or either we need to have transactions with so and so party. See, interbank अगर है, interbank या intermediary जो भी है, say for example JP Morgan या something like that, उनको सबसे बड़ा पैसा कहाँ से मिलता है? If they are working as intermediary, commission, brokerage, whatever we have seen so many examples of different transactions, right? SBI को पैसा चाहिए था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देना, whatever, and then JP Morgan has facilitated, right? But in all these cases, even if JP Morgan is earning only 0.5%, but since because the transaction amount is about, say for example 10 CR or 50 CR, still they are going to have a good amount of profit. तो अगर वो transaction आपने ही handle करके पूरा deal close कर दिया, then of course it is going to be beneficial to you from promotion perspective. हो सकता है ना? Otherwise see, बाकी सब तो डेटाबेस का आप जो काम कर रहे हो बैक एंड में, बैक ऑफिस में, वो तो करने ही वाले हो. बट इफ यू वांट टू हैव मोर अमाउंट ऑफ, लाइक से फॉर एग्जांपल योर गुडविल डेवलपिंग, या you want to have more from the sales perspective, then you need to have good relations in all these cases. Only then you will be able to flourish and develop in the organization. Last one is trades in a specific market or security group. So STO, if it is trading in a marketplace for the first time, it may wish to recheck that trade cash values are accurate and custodian details are correct for all the trades and securities within the given group before transmitting this information to the outside world. So you need to check that a given security or a given security of a given market belongs to that particular transaction market. Then you are establishing your transaction process with the counterparty, exchanging information with the custodians, and only then your transaction will be executed. Okay, so more or less every process here is related from the admin perspective, but there could be multiple checks or multiple processing from at every end. Okay. Okay. Now another validation will be related to custodian, market price, trading book, trade date if it is of the past, and value date if it is of the past. Okay, so first, whenever trades are get due to settle at with a given specific custodian, sometimes it could happen the counterparty will be changing the custodian in between the process. It can happen, right? If I'm changing my custodian, say for example on the transaction date we were having custodian 1, but whenever the maturity time came for that particular given security, the custodian 1 changed to custodian 2, then you need to update your system accordingly. You need to include all the details of custodian 2, and also need to inform that so and so security is held with me, and once it gets matured we need to exchange our whatever the shares or securities against the amount which has been transacted. Okay, so double checking is also important, as well as we need to make sure
So in some another cases, we need to check, first of all, the second is the market price. Okay. So as a precautionary measure, an STO will need to decide and check, validate all the trades, check whether the given trade prices are reasonable. It shouldn't happen that one Reliance is bought at 2000 and another Reliance slot is bought at 4000. Okay. If any such entry is identified, you need to immediately raise the red flag. It is called a red flag system basically. So it is type of an error that has been generated in the system, and you need to inform to your senior level authorities that such error has occurred. And of course, they will be guiding you that what next steps that you need to perform so that this error can be avoided. This is to guard against mistakes and the attempts to defraud the STO. STO is Security Trading Organization. It can be anyone. Trading in a specific trade book. So the management of the SEO may wish to monitor the trading actively of a particular trading book or trader before the new trades are conveyed externally. It can occur when the management will be having any specific underlying reason to scrutinize the business which is being executed. It might happen that the trading book will have different types of formats or different types of entities and fields. For one particular entity, for another entity, you need to create another log, or you can say you can create another journal for them, so that you will need to record another set of details, but in a different way. Another set of entities or another set of different fields will be presented, because it's not always necessary that custodian one or the counterparty one will be always referring or checking the same type of details which our customer two or counterparty two is going to ask for. Okay, so you need to balance with that. Trade within the given trading date in the past. So any new trade that has a trade date in the past may be held for validation to ensure that it is valid, provided if there are no such changes made. If changes are made, then you need to check the reason that why such and so forth transaction has been changed. What was the issue? You need to then connect with the concerned person or concerned team and ask them what was the major reason of changing the transaction date. So for example, on equities, entitlement to income is governed by the trade date. And the last one is the trading with the value date. So any new trade with value date in the past should be held for validation, as it will indicate that something has gone seriously wrong if the value date has been changed. If the settlement of the trade should have occurred in the past, this is highly likely to result in a cost to the STO for not only failing to settle, but also for failing to have that settlement instruction with the custodian prior to the value date. So in that case, what will happen is, validation date was 20th April. Okay. Value date was 20th April, and actually for some reason it got changed to 25th and the transaction got executed on 25th. Then definitely if you haven't cross-checked that why 25th was modified, then definitely that entire relation, that entire transaction is going to suffer. Okay, you will be solely responsible. So one thing you need to check is price. Another thing you need to check is the settlement amount, and third thing is you need to check is the trade date and the value date. Is that clear? Any doubts so far? The trade validation or trade transaction types. Anyone got that image of SAP we had discussed? SAP Finance of FICO? That day, but that was actually from the marketing perspective. Anyone got that clear image? Because last image that we had shared in the group was related to, I mean, that was more of a blurred image. किसी को नहीं मिला क्या? देखा ही नहीं था. लास्ट टाइम कितने लोगों ने वो देखा था SAP वाला इमेज? Who haven't seen yet? इसको नहीं क्लियर है? That is related market sales वाले हैं. ऊपर एक फाइनेंस करके लिखा होगा लेफ्ट साइड पे. वो इमेज हमको चाहिए अगर कहीं से मिल जाए तो. Someone in the class told me that. हाँ, you told me that. कुछ मिला क्या आपको? फाइनेंस का नहीं है. अच्छा. अच्छा ठीक है. Okay. So if वो particular image मिलता, then definitely we would be able to check how all these transactions are taking place. Okay.
Let me just check if I can get one. Just a minute. Master data. Second, ये दिख रहा है क्या थोड़ा accounting perspective से, but still it is important. A little bit of fields can be different if you can see your whichever software or whichever the platform that you will be working upon in your respective organization, but this is related to the SAP. Okay, so basic data document date we can say is the trade date, posting date is the value date. Okay, we can just enter it currencies, euro or USD or INR. Okay, reference, of course if there are any other details related to the reference you can mention over here. Online students, are you able to see this image? Yes, sir. Okay. So then document header text. So document header text is more of like if there is a security name, you can just write it, what is the name of the security, and just write second name as the counterparty name. Okay. Cross CC number is more of like a reference number. Okay. Cross check validation के लिए अगर आपको कोई reference number लिखना है, you can write it over here. Okay. Company code, if it is already predefined, then you can say example company Murich. तो उसका कोड है MM01. So this is more of like the branch as well as the country name. Okay. So if it is from US, MM02, okay, something like that. And company code, of course, if it is JP Morgan, you can write JP01, JP02, JP03 like that. Okay. What is the total information? What is the total amount debit? What is the total amount credit with respect to the given securities? Then here it will be the first entry. This is more of like a P&L accounting system. You will write it your first entry over here. Okay, these securities are going to be exchanged at so and so price. Amount in the document, whichever it is mentioned. Tax jurisdiction code if it is applicable. Say for example, if it is India, we can just, if we have any such a GST code, 12% or 18% one, we can write it over here. This will actually help where to calculate the final settlement amount. Okay, net settlement amount, and assignment or value date will be entered over here. So getting an idea now how all these things are getting entered. Now say for example, if there are 100 of such entries, you are going for the trade validation. Of course, manual errors are going to be high. So for that purpose, you need to make sure that कहीं पे वो extra zero ना लग जाए, काउंटर पार्टी का नाम चेंज ना हो जाए, कंट्री कोड चेंज ना हो जाए, करेंसी चेंज ना हो जाए, डॉलर का यूरो का इंडियन रुपीज. Is it clear now how this transaction are taking place? या any doubt in this? समझ में आ रहा है यहाँ पीछे क्या बोला क्या? हाँ अच्छा, ये वाला इमेज देख रहे थे. तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ये समझ लो. इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस थिंग्स आर गेटिंग एंटर्ड इनटू द सिस्टम. इसका पूरा एक रिपोर्ट निकलेगा. दैट रिपोर्ट यू नीड टू सेंड टू द सीनियर लेवल. ठीक है, डे टू डे बेसिस भी हो सकता है, फोर्टनाइट, मंथली, वीकली, एनीथिंग इट कुड बी देयर. ओके, और जैसे ही कुछ मैच्योरिटी किसी का हुआ या समथिंग लाइक दैट, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट वी विल बी कमिंग टू नो. अच्छा ओके, दिस पर्टिकुलर वीक वी आर हैविंग मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स. Another week we are going to a maturity of any other fixed income instrument, and after third week we are going to sell our shares. Okay, so this is like more of like a report generation that will be taking place, that you can generate from over here. यहाँ कहीं से तो एक option आता है उसका, either from document या somewhere else. Okay.
Yeah. Data you will be getting of course from the front and middle office. Okay. But वो कैसा होगा, एक receipt होगा या तो फिर that will be like more of a transaction note. Okay, now that details you need to manually enter over here. Okay, based on whatever details, then you need to make sure that you are having a follow-up of all those details. Okay, so this is how the approach has to be. But sometimes it could happen that transaction note exchange हो गया या transaction note आया ही नहीं है and still the counterparty is asking कि where is my report, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि free of payment वाला issue है. Free of payment का देखा था ना, क्या था, what was free of payment? FOP. Yeah, securities will be transferred without any payment. Okay, of course payment will be done, but in the future. Okay, so if the securities and shares are already transferred, then how are you going to mention the amount over here? Because that is still not taking place. So all those things you need to check. Let me just check another image. You find one? Share in the group. Just share that image in the group. I will just share it over here. अच्छा, आपने यही देखा था? Okay. But this is goods received purchase order. So this is more related to that supply chain and logistics ones, I guess. Yeah, उसके related है. But we can still check one thing. Let me see if I have it. वीडियो तो कहीं था इसका. Yes. Where both agree upon some interest, and so this trade flows into various stages.
Okay, let's continue. वो image नहीं मिल रही है. Okay. Now, what are the different methods of trade validation? The first one is manual trade validation, as well as second one is automated trade validation. Okay. So in manual trade validation, due to the number of trade components performing validation manually is likely, a limited number of components will be validated so that adversely affect नहीं होगा considering the deadlines. So वही मैं बोल रहा था कि अगर एक दिन में 500 transactions आपको validate करने हैं, तो definitely that manual is going to be difficult for you. In another case, if it is an occasional human error resulting in a failure to identify the risk associated with it. But if it is an automated trade validation, the processing of all the trades can be highly automated while achieving satisfactory levels of STP and control over those situations requiring additional trade validation. And secondly, after each trade is validated or enriched, the system will compare the trade detail with all the relevant rules. So what will be basically happening over here is, if it is a manual one, the number of trade validations will be limited. In the case of an automated, you can have n number of validations. Secondly, in the automated system, once the validation is done, it is known as trade enrichment process. जो भी data आपका था, that is very reliable and credible. Okay, that you will come to know. But sometimes in very extreme case situations, जहाँ पे transaction amount is higher than 50 CR or 100 CR, you need to have double cross check of this validations, right? So this is how the difference. Just write the methods of trade validation, manual and automated. And automated में एक चीज ये लिखना कि after each trade is enriched, the system will compare the trade details with additional relevant rules. So there could be few processes defined, or there could be few functional norms defined for rechecking the trade. ये trade का data सही है ना कि नहीं है? Okay. अक्सा में इंटरव्यू मतलब सिर्फ 2 ही लोगों का हुआ, अगर मैं देखने को जाऊँ. आपका स्क्रीनिंग के बाद ही रिजेक्शन हो गया, ऐसा हुआ ना? एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ है. आपको कुछ बोला कि क्या बोला डायरेक्टली? हाँ. ओके. और कुछ नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नॉट अ सिंगल लाइक लेवल 1 अपना या टेक्निकल क्वेश्चंस बैकग्राउंड? नो. आपका एक राउंड हुआ? ओके. हाँ. मेरा भी हुआ था. किसका हुआ था? मेरा भी हुआ था, मैं भी गया था. हाँ, तो क्या बोला आपको? टीसीएस का 90 डेज का नोटिस पीरियड है ना, उसकी वजह से वो बोले कि अर्जेंट हायरिंग है और ये नहीं हो सकता, जॉब रोल तब तक नहीं रह सकता. तो नोटिस पीरियड कम करो और पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर से एक बार बोलते वो रजत को बोलते HR. आप अभी करंटली कहीं जॉब कर रहे हैं मतलब? हाँ, टीसीएस में हो अभी. ओके. ओके. तो कितना नोटिस पीरियड बोला आपको? 90 डेज का नोटिस पीरियड है ना टीसीएस का. अच्छा. ओके. इन दैट केस उनको वो नोटिस पीरियड ज्यादा लगा. हाँ. ओके. एनीवन एल्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु हैड अपियर्ड फॉर द एक्सा इंटरव्यू? संकेत इज ओनली वन, राइट? और आपका एक भी मतलब क्या इन्हों के? नहीं, राउंड 1 हुआ, राउंड तो कुछ भी नहीं. अच्छा, इनका टर्न ही नहीं आया मतलब?
अच्छा आप थर्ड दिन अच्छा जाने वाले थे, वो कैंसिल ही हो गया आपका भी वही? ओके, आप नहीं गए थे ना? ओके, मतलब क्लास में से सिर्फ 4 लोग गए, वैसे 2 का स्क्रीनिंग में रिजेक्शन और 2 का, 1 का आपका सेकंड राउंड दूसरी बार हुआ और आपका भी हुआ ही नहीं। हम्म हम्म ओके ओके हम्म ओके आपका लास्ट राउंड कल हुआ था मतलब? नहीं नहीं, जो आपका लास्ट राउंड हुआ था वो कब हुआ? कल? हाँ, तो उसमें आपको क्या क्वेश्चंस पूछे? ओके, कॉल ऑप्शन, ओके। तो आपने क्या आंसर बोला? नहीं नहीं, कॉल ऑप्शन मैं बेरिश मार्केट था। हाँ हाँ, ठीक है। वो मार्जिन नहीं देना होता, दैट इज जस्ट लाइक अ वेरी इन अ, सी बेसिकली इन द केस व्हेन यू मेंशन, no, you have to say that whatever amount of investment that I'm making in the cash equity or in the future, my amount of investment in the case of options is always going to be less. Why? Because they are always, say for example, if it is sitting at 20 rupees and Reliance lot size is 250, so net amount of investment that I will be making is 5,000, but on the other end I will be having 250 quantities because the lot size is such. Okay, on the other hand, if I'm making 5,000 investment in the case of a Reliance equity, cash equity, I will be getting only 2 shares. 2,500 is the spot price. So only against 2 quantities here I am getting 250 quantities, and even if it is changing by 2 rupees, I am getting a net profit of 500 rupees. So on a 5,000 investment, I am making a 10% return straight away, just even if it is increasing by 2 rupees. That IB and TV will be coming later. It will not be coming. हाँ, तो वही हुआ ना, कम इन्वेस्टमेंट। नहीं, प्राइस, amount of investment is always less in option. That is the primary reason that you are going for options. Getting my point? Huh? In lesser amount of, now say consider, say for example in the cash equity what would have happened, say for example 2,500 से वो 26 हो गया, तो 100 रुपए बढ़ा, आपके पास तो 2 ही शेयर है तो 200 रुपए मिला, तो 5,000 के इन्वेस्टमेंट में 200 रुपीज रिटर्न, एंड यहाँ पे 5,000 के इन्वेस्टमेंट में 500 रुपीज का रिटर्न। कैन यू चेक द डिफरेंस नाउ? 10% and 2%. Getting that point? Initially, always the amount of investment in options is always less, and the amount of returns that you are going to expect in that is always going to be high. So my risk reward ratio is always going to be much higher compared to my cash equities. One thing. Second, options are always meant for short term time, maximum 1 month. ओके, उसके बाद तो फिर सीरीज ही चेंज हो जाएगी, अप्रैल का मई आ जाएगा. बट इन द केस ऑफ द इक्विटीज, you need to mention that suppose if the trend is getting reversed, I can hit my stop loss in the case of option, but of course in the case of equity I can take it for lifetime because I am the owner of that share. So this is how you need to explain that calculations of how the price of option is going to take place, वहां पे वो IB और TV आएगा, अदरवाइज उसकी डिस्कशन में वो पॉइंट नहीं आएगा. हाँ, that then it's fine. हाँ, तो then you can say, हाँ, then it's fine. एक ही क्वेश्चन आपको पूछा था, and no other questions other than technical derivative or stock plate. Okay. ओके, और ये रोल था क्या?
अच्छा, मतलब यही कर रहा है, ये जो कर रहे हो अभी, ट्रेड टू लाइफ साइकिल। हाँ, यूज टू, क्योंकि लाइव मार्केट्स में वो 250 लॉट की जगह 2500 लॉट डाल दिया गलती से, तो फिर आपका वो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, अरे एक ही क्वेश्चन हुआ पूरा, मतलब दैट्स वेरी स्ट्रेंज, मतलब एक या दो। ओके, ठीक है, बट स्टिल मेरे मेरे हिसाब से कुछ होना चाहिए था, बट समथिंग आई डोंट नो। हाँ, और अगर फर्दर के लिए कॉल आएगा और आपका हुआ ही नहीं है, सिर्फ 8 लोग बचे फाइनल में, सेकेंड राउंड में बाकी सब फिल्टर्ड इन फर्स्ट राउंड, तो मतलब आपका शायद हुआ ही नहीं है फिर। हाँ, इंटरव्यू तो नहीं, रिजेक्शन में। ओके, ओके, ठीक है। कोई वेंकट या कोई था आपके साथ, वेंकट समथिंग, क्या नाम था? नहीं, एक सेकेंड, वेदांत पवार, कोई वेदांत पवार, कोई दूसरी आपका आपके साथ था क्या फाइनल राउंड में? अच्छा, राउंड हो गया था। स्ट्रेंज। Anyways, let's do one thing. We will take a break of 15 minutes and start again at 11. Okay. Online students will be reconnecting at 11. So if I count in our class from our SIBOP 9 batch, one Sanket is from online, 2, 3, 4, 5, 6 had applied, right? And only 2 actually got for the interview. Okay. Yeah, we will be reconnecting at 11. Okay. That is a very basic thing. See, someone is showing too much of interest, तो उसको फिर एक ही फिक्र रहती है कि यार आपका स्टडीज भी चालू है, आपका यहाँ प्रोग्राम भी चालू है, आप जॉब कैसे ज्वाइन करोगे फिर? ठीक है, तो दैट मीन्स कि योर दैट हैज टू बी अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट, बट आई लेट मी जस्ट चेक क्या अपडेट है।
Okay. So now let's continue with the trade validation, trade agreement and settlement. Okay. This is for the rest of the lecture. So basically what is happening over here is, if you can check over here, trade capture is the first point where all the trade details will be recorded. Okay. Then for the trade enrichment purpose, you will be performing a set of processes through which you will be validating the trade details. We have already seen that 7 to 8 different categories, right? We have written also. Okay. Now, based on that, you will be checking whether the trade is validating to the given details or not. Okay. If it is not, if it is failing to do that, then there will be an exception generated. Exception is more of like a red flag that I have already mentioned, which is like an error, you can say, or you can even say that, okay, there is a false data being presented over here and we need to cross check it. Okay. So settlement will be done with the supervisor. So basically it could be your team leader or it could be your any other senior level officer with whom you will be checking all the data. If it is perfectly fine, that data will be again going back to the trade validation database, after which it will be going into trade agreement. Now see, trade agreement is something like when the actually transactions are taking place at both the ends. Okay, so I will be saying, okay, send me this much amount of rupees and in exchange I will be transferring you a specific amount of shares. That is the agreement that is being done. And finally, once the trade is completed, you need to report the transaction with the given date, time, place, branch, or who is the counterparty, custodian, amount, and final settlement amount. Okay. Of course, you need to make sure that all the validation rules have been applied clearly to the trades have been carried out. Is this clear now? So basically, you need to be very much confirmed, or you can say affirmative, on all the different aspects of trade validation. Okay. Now, trade agreement can be achieved through the issuance of outgoing trade confirmation to the counterparty, the receipt of the incoming trade confirmation from the counterparty, then carrying out trade matching, and after that trade will be affirmative at both the ends. So trade agreement is achieved through communication with the details of all the trades to the respective counterparties, whereupon the counterparty need to check the detail and revert to the STO. If it recognizes the trade but the details differ, it does not recognizes the trade at all. Okay. So basically trade agreement will be, of course, the issuance of the outgoing trade transactions. मतलब क्या हुआ? You are issuing a particular confirmation to the counterparty that for the given amount that you are transferring, I will be sending you this much amount of shares. Okay. Now, once I am sending it, he will be acknowledging it, and only then he will be sending me the mail or something, whatever the communication mode is. Okay, he will say that is fine. I am transferring so and so amount in your account, and once that is done, please transfer the shares to my account. So basically, the custodian will be there in between, but of course, you need to make sure that at both the ends a receipt is being sent so that you can confirm the trade. Otherwise, you will not come to know who is the counterparty, what is the security, what is the amount, what is the value date, how much amount needs to be transferred, in which account, from which branch, at what time. All these trade details you need to have. Okay. Once that is being completed at both the ends, trade matching will be done. Only then we can say our trade is confirmed. Okay. So just write the 4 steps of trade agreement. SW इलेक्ट्रिक में अपर सर्किट लग गया। अभी जस्ट 400 पे हम लोग बात कर रहे थे। कौन सा 60? हाँ 30 से, मतलब कहीं से जहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन आ रही है या हमारा जो ग्रुप है उनको भी कहीं आगे से इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमारा तो ग्रुप काफी टाइम से है, पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है। नो इंटरनल वी आर देयर, नो टेलीग्राम। टेलीग्राम तो बहुत फेक, ट्विटर फेक। अरे आजकल लोग तो कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ फैन फॉलोइंग, मतलब ट्विटर में तो फॉलोअर्स रहते हैं 70-80,000 समथिंग, लाइक पूरा का पूरा फेक आइडिया, सेम टू सेम, सेम इमेज, आईडी, नेम,
सिर्फ कहीं पे छोटा सा चेंज करेंगे सो दैट द नेम ऑफ द हैंडल इज डिफरेंट. ओके, कहीं पे फुल स्टॉप डाल देंगे या डबल डी डबल समथिंग अल्फाबेट विल बी रिपीटेड. सेम बायो, सेम इंफॉर्मेशन, सेम ट्रेड्स, सेम एवरीथिंग विल बी देयर. So please be aware about all such fake things. बैंक निफ्टी के दो बड़े ट्रेडर्स से कल वो लोग, वो क्या कौन सी प्लेस है दैट ऋषिकेश वन, उत्तराखंड, वहां से ट्रेड कर रहे थे. मतलब 4 दिन का छुट्टी था मार्केट्स में, थर्सडे टू संडे, तो वहां पे घूम के वहीं से ट्रेड ले रहे हैं. एंड दे आर एबल टू मूव बैंक निफ्टी बाय 50 to 100 पॉइंट्स. उतना वॉल्यूम 2 लोग जनरेट करते हैं. हाँ, एक मितेश पटेल करके है, हर्ड, ठीक है. दूसरा गौरव वशिष्ठ है, बैंक निफ्टी एडिक्ट. मतलब उनका भी बड़ा ग्रुप है, दर्शन जोशी करके 3 लोग, बहुत सारे हैं. अराउंड 60-70 CR वॉल्यूम्स दे आर जनरेटिंग वर्थ. ट्रेड कॉन्क्लेव्स होते रहते हैं, गोवा कार्निवल्स वगैरह वो सब होता है. इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड कैन गो देयर. गोवा में होता है आजकल, इसलिए तो गोवा रखा है, so that people will be attracted to come. ट्विटर स्टार्ट फॉलोइंग वैल्यूएबल ट्विटर हैंडल्स. अच्छे ट्विटर हैंडल्स फॉलो करोगे. अरे एक अभी एक स्टॉक था ना BAG फिल्म्स, किसी को बताया था क्या मैंने, राइट? 5 दिन से अपर सर्किट मार रहा है. मतलब इफ यू काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो 25% रिटर्न हैव बीन जनरेटेड इन दिस. कहाँ से लेके आते हैं पता ही नहीं चल पाता है. मैंने यस्टरडे वो पोजीशन वहां पे क्लोज कर दिया था फिर, क्योंकि 20% हो गया, बहुत हो गया बस. क्योंकि इसी इन दिस स्टॉक्स फिर वही होता है, अपर सर्किट से लोअर सर्किट होने में टाइम नहीं लगता है इन स्टॉक्स की, तो फिर एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिलता है उसमें. तो जो भी है लेके निकल जाओ. 20% इन 4 days इज टू मच. ओके, तो नेवर बी ग्रीडी. स्टॉक मार्केट का कोई भी अगर फ्यूचर में स्टार्ट भी करते हो ना, कुछ भी मिले ना 5%, तो पहले तो वहीं से स्टार्ट करो निकलने के लिए, इंट्राडे या पोजीशन वाइज. Slowly then 10%, 15% has to be the strategy. So next, agreement and settlement. The matching of sellers and buyers trade details is in many cases effected through 2 different routes. First of all, it is agreement. So trade agreement will be the agreement of the trade details between the security trading organization and its counterparty. So they will be both agreeing with each other. Once the instructions are settled, matching the custodians of the buyer and the seller, they will attempt to match the settlement instructions before delivering the security and payment of cash. So this is more of like a process flow. पहले एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में, नॉर्मल एग्रीमेंट जैसे होता है कि ठीक है 50 lakhs आप मुझे पे करिए, in return I will be giving you 1000 shares of Reliance. Okay, now we have done the deal. We will say okay, on this particular date we are going to exchange the instructions. सेटलमेंट इंस्ट्रक्शंस विल बी लाइक ओके, तो मैं बोलूंगा ठीक है आप पेमेंट कैसे करोगे और कब तक करोगे. तो विल से ठीक है आई विल बी डूइंग RTGS, NEFT, व्हाटएवर इज देयर ऑप्शन. इफ इट इज इन विद इन द इंडिया, बाहर का होगा तो स्विफ्ट. ओके, इन दैट पर्टिकुलर केस ओके आई विल से इन 2 particular stages I will be making you the fund transfer. First 25 lakhs on day 1, another 25 lakhs on day 2. Okay, I will say once you transfer 25 lakhs, I will be acknowledging it and sending you the receipt in return. And whenever the second installment comes, immediately within 1 hour, I will be sending you the amount of 1000 shares of Reliance in your account. Is it clear? These are the settlement instructions. कि अगर 50 लाख रुपए पैसा आ गया तो 1000 शेयर्स में उसके तुरंत ही 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा. If that is agreed, that details goes to both the custodians. Then custodians will be trying to match that particular transaction and perform the transactions. Clear? तो custodian को वो transaction भी perform करना पड़ेगा, but they cannot stop the transaction. They cannot invalidate the transaction. They can only inform about any negative aspect or any other manual error if any. Okay? Now, reducing the risk of security trading organization. For all the executed trades, STO will remain at risk of its trading P&L being incorrect if the trade has not been agreed or matched with the counterparty details with a reasonable time frame
The P&L remains subject to change until it is proven that all the trades have been agreed by the counterparties. Because of that risk, the objective is to gain agreement of the trade detail as soon as possible. To restate this, the trader has just executed a trade with a counterparty. The trader has recorded the trade within the STO's trading system. The trade has also been captured within the STO settlement system, and the trade has been validated internally. So basically what things are happening over here is, say for example, there was a manual error, okay? Because of which, now say it might take time. We don't know how much time it is going to take for rectification. It might take 1 day, it might even take 1 week, or sometime in extreme cases, it can even take 1 month. But until that, whatever profit or loss was going to get generated through the transaction will not get reflected into your book of account. जब तक settle नहीं करोगे तो account में profit हो रहा है कि loss हो रहा है वो पता नहीं चलेगा. And because of which your correct P&L is not reflected, और उसकी वजह से आपका जो organization है वो एक risk के ऊपर है. Say for example in terms of sales targets or in terms of revenue targets, अगर March ending या year ending है something like that, the annual targets, everything will be at risk. So you need to make sure that all these risk factors are avoided, and trader needs to execute all the trades with proper validation. Clear? Any doubt in this? Theory है तो थोड़ा I can understand. There is no other option in learning all this, but of course जब एक बार transactions का recording and reporting start होगा, then you will be having more clear idea. Okay. Okay. Then trade agreement methods. First method, the issuance of outgoing trade confirmation to counterparties. Second one is the receipt of incoming trade confirmations from the counterparties. Third one is trade matching, and fourth one is trade affirmation that we have seen. But these are the more of like all the 4 methods that we have seen. अभी just यहाँ पे देखा था. Issuance of outgoing trade, receipt of incoming trade, trade matching, and trade affirmation. Okay. So in the first method, STO will be required to issue a trade confirmation to its institutional clients, particularly when the trade affirmation facility is not used or not available. It is likely that STO will need to issue a trade confirmation to other STO with which it trades, particularly where a trade matching facility is not used. So basically issue आपको तब करना होगा जब आपके पास ट्रेड एग्रीमेंट का इंटरनल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां से आप डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सको. ठीक है, वन थिंग. सेकंड, ऑफ कोर्स इवन इफ इट इज देयर, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको ट्रेड इश्यू करना चाहिए सो दैट एक एक्नॉलेजेबल रिसीट रहे दोनों एंड पे. कल जाके सुबह उठ के कोई ऐसा ना बोल दे कि अच्छा मैंने तो ऐसा कोई ट्रेड इनिशिएट ही नहीं किया. आपका कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बने कितना अच्छा हो, अस्टेट आपका हो गया कोई ऐसा, ठीक है, वी नेवर नो. तो देयर हैज टू बी अ प्रूफ विथ यू दैट ओके मेरे पास इनका ये मेल था, ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड मी टू बाय सच एंड सच सिक्योरिटीज फॉर दिस अमाउंट ऑन दिस डेट. ओके. Second thing, the receipt of incoming trade confirmations from counterparties. So STO will need to receive all the trade confirmations, but is very unlikely to receive unless and until if there are any other types of communication modes available. So once I send the trade agreement with the client, with my institutional client or counterparty, I need to make sure that I am also receiving their acknowledgeable receipt with me, and then I will be recording it, all the details in my system. Correct? The third thing, trade matching. Of course, we have already seen this, that mandatory electronic matching of all the trade details has to be there between STO or the markets or STO and the institutional client requirements. Both the parties to the trade are required to input the details to a central trading machine or matching facilities and make sure that all those details are correct and accurate. Finally, in the trade affirmation, it relates to the optional electronic matching of trade details. The trade details are input by the STO to the trade affirmation facility, and institutional client will agree or disagree in the case if the information is not matching. So just write these 4 methods of trade agreement methods. This 4 trade agreement methods लिख लिया ना? Okay. So basically we have already understood then हर एक में क्या क्या हो रहा है. Okay. Outgoing trade confirmation. So the trade confirmation is more of like a formal statement of the given terms of a transaction, which will be issued by the STO to its counterparty, whether it could be an institutional client or another STO. Now, what will it will include? It need to provide a high quality service, of course. जैसे मैंने बोला था, आपको एक relationship manager की तरह ही आपको काम करना है, तो you of course you need to provide best quality services. Second, they need to issue the trade confirmation. जैसे ही trade agreement खत्म होता है, आपको एक trade confirm हो जाए, उसके लिए ट्रेड एग्रीमेंट का एक रिसीट भेजना होगा उनको, so that the transaction is executed. Third one,
the content of the trade confirmation. Okay, whether the given trade has been confirmed or not, all those particular details has to be there into your system. Fourth one, what is the method of transmission of funds as well as of shares or the securities which is transacted. So you need to mention whether it is NEFT, RTGS or SWIFT, and similarly whether how you are transferring the amount of shares from one account to the another. Then number of copies required by the counterparty, language in which the confirmation is issued, because what will happen is sometimes you will be dealing with international clients and you need to write in Spanish or Italian or in French language also. लेकिन आपको सीखना नहीं है, वो और कोई कर देगा या तो सिस्टम में ऐसे ऑटो जनरेट होगा. Why? Because most of this UK based investment companies are having majority of the transactions in the European nations. अगर कल जाके अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोई जॉब अप्लाई करते हो लंदन में, तो पहला रिक्वायरमेंट पूछेंगे स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच आता है, देन ओनली प्लीज कम. ठीक है, because that is more of like a mandatory condition nowadays. And last one is the automation of outgoing trade confirmation. Okay, so just write these points of how the outgoing trade confirmations are met. Okay, लैंग्वेज में एग्जांपल्स लिख लेना. ठीक है, जहां जहां पे भी हम लोग ने एग्जांपल्स डिस्कस किए, जस्ट हैव अ लाइक वन सेंटेंस ओवर देयर सो दैट यू विल रिमेंबर कि हमने क्या डिस्कस किया था. Morpen Labs, has anyone heard of it? बहुत फेमस फार्मा कंपनी है, वैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी आती है उनकी. मोरपेन लैब, वो शुगर ग्लूकोज टेस्टिंग मशीन्स आते हैं. नो आइडिया? इट इज वन ऑफ द बेस्ट मल्टी बैगर्स. कुछ 50-60 रुपए पे चल रहा है. फ्यूचर में कभी ना कभी वो 500-1000 आई एम एक्सपेक्टिंग. उसका एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करना तो वो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा. व्हाई आई एम प्रेडिक्टिंग दैट. मोरपेन लैब्स, मोरपेन लैब कौन सा? ANG. ओके, शायद आई एम नॉट वेरी. कितना चल रहा है अभी? आज भी कुछ प्लस है. कितने टाइम से वो 40 to 60 के बीच में घूम रहा है? 60-70 शायद गया था एक बार.
आई एम जस्ट वेटिंग कि एक बार 100 को क्रॉस करेगा ना ऑटोमेटिकली रीवैल्यूएट हो जाता है. द शेयर्स डू गेट रीवैल्यूएटेड इन द स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली. मतलब उनका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. विच वन? दिस वन ना. हाँ, वो मैं इसलिए तो बोलता हूँ योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स आर हैव ऑलवेज टू बी डिफरेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो डाल के भूल जाओ, 5-10 साल के बाद देखना. ठीक है, ट्रेडिंग का यू कैन जस्ट आज लिया, एक आध महीने के अंदर में बेच दो. दैट इज टू बी द स्ट्रेटेजी. Written, everyone? Okay. So this is the process flow, how the trade confirmation and agreement will be carried out. We have already seen once. We are again checking with another details. This is your basic STO organization from where the trade agreement will be taking place with the institutional clients. So they will be sending the trade details, first of all, trade confirmation to the institutional clients. ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अच्छा, okay, they will be checking with all the details. They will be sending all the details of the given trade और उसको भेजेंगे ट्रेड अफर्मेशन फैसिलिटी के लिए. 4th स्टेज में और 3rd स्टेज में भेजेंगे ट्रेड मैचिंग फैसिलिटी. वी हैव ऑलरेडी सीन दोस 4 stages and 4 steps, right? So once the STO is having all the confirmation matching status, they will then decide, okay, let's move on and carry out our transaction. If not, there will be discussions or few meetings will be taking place between you and the client regarding either the prices or the quantity or any other credibility information. Okay, जब तक एग्री नहीं करेंगे वो लोग अपना ट्रांजेक्शन्स कंफर्म नहीं करेंगे. आपका रोल है कैसे भी करके उनको एग्री करवाना. बिकॉज सी समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज if the client is having a transactions either related to money market instruments or fixed income, they will be generally demanding or expecting a good amount of returns. Equity hota to theek hai, chalo you can expect higher amount, but in the case of money market, bonds or fixed incomes, definitely the rate of return is going to be low. Say for example, you are working in JP Morgan, you are working in Citibank, another one is working in Morgan Stanley. You are providing 6%, 7%, 8% for the same bond. Maturity period is also same, bond is also same, then definitely is going to have the best negotiation deal, right? So you also need to learn the skill of negotiation. Okay, soft skill हुआ है क्या negotiation का? नहीं ना? Probably this Thursday आपका है ना शायद. हाँ, soft skill. तो प्लीज एटलीस्ट 2 चीजें उसमें पूछना. आपका CV बिल्डिंग बाकी है ना, CV रेज्यूमे वगैरह जो भी है. One thing, and second thing, I hope वो negotiation skills से कैसे करते हैं. I will inform Kaushal sir also कि प्लीज उनको ये बता देना एक बार. Because see, negotiation जब तक किसी को नहीं आएगा ना, he will not be able to beat the market, definitely for sure. क्योंकि अगर हायर रोल्स में जाना है तो बैक ऑफिस में ही रहना है तो अलग बात है. इनपुट आउटपुट चलता रहेगा, nothing else. But if you really want to process something, you really want to have the product in your hand and sell it something, तो आपको मार्केटिंग का वो सेल्स मैनेजर तो बनना ही पड़ेगा एक बार, भले ही आपका वो टैग हो फाइनेंशियल एसोसिएट का. ठीक है, ओके. So content of the trade confirmation from name of the issuing STO to where? To the name of the counterparty, whether it could be institutional client or another STO. Attention, so relevant person or name of the department of the given counterparty. Subject, so the heading has to state the message purpose, that the trade confirmation, right? Once you are sending it, I am always having the message trade confirmation, trade agreement, and then write so and so securities and something like that. Operation is either buying or selling, lending or borrowing.
बाइंग सेलिंग होगा तो इक्विटी, लेंडिंग और बोरोइंग है तो आपका डेट मार्केट, करेक्ट। ट्रेड डेट, द डेट ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड टाइम, द टाइम ऑफ द ट्रेड एग्जीक्यूशन, प्राइस ऑफ कोर्स विच इज द कोटेड अकॉर्डिंग टू वेदर इक्विटी और बॉन्ड, ठीक है। प्राइस मतलब या तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, बॉन्ड होगा तो उसका कूपन वैल्यू या आपका यील्ड टू मैच्योरिटी। And the last one is sign off by the STO, that is his full name and the location of the STO. Okay, so basically whenever you are sending an email or whenever you are communicating with your institutional client, you need to include all these details. Okay, just write all these details. I'm coming in 5 minutes.
Just got disconnected there. That's why. Okay. ये एक और चीज है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि डायरेक्ट क्वेश्चंस, अभी आपको आइडिया, थोड़ा तो आइडिया आ गया ना सर, कि नो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्क्ड, ठीक है? तो दैट्स व्हाट माय अल्टीमेट अप्रोच वाज, कि जो भी एग्जांपल्स वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास, whichever relevant practical based applications we have discussed, please make sure of describing them properly, ठीक है? अगर concepts में उनको लगा कहीं पे भी कि थोड़ा वीक है, it will be too much easy for them to reject it. ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. जैसे कोई टॉपिक था वो नहीं आता, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. कंसेप्ट्स में गलत गए, यू आर आउट. कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ? ओके, तो अगर वो डेरिवेटिव का वही, एक्चुअली मुझे थोड़ा अभी याद आ गया आपका, कि अगर वही आपने वो कॉल ऑप्शन लिया, सेल किया, बाय किया, जो भी है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रेड वैल्यू कैसे आया, टाइम वैल्यू, सो हाउ ऑल दोस थिंग्स आर वर्किंग, यू नीड टू अवेयर अबाउट. जितना हो सके उतना लेवल 1 को कॉन्क्रीट कर लेना, दैट्स योर बेस. ओके, उसके बाद ये सब चीजें ऑफ कोर्स वैलिडेशन पर्सपेक्टिव, एग्रीमेंट पर्सपेक्टिव, सेटलमेंट पर्सपेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट, but at the end of day you have to be very thorough for level 1. कई लोगों का अभी भी कुछ मिक्सअप हो रहा है थोड़ा बहुत, प्लीज गो थ्रू एंड मेक श्योर कि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए. नोट्स जितने भी बनाए हैं तो थोड़ा यू कैन स्टिल एक्सप्लोर फर्दर, और थोड़ा यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर ओन. ओके, बट अदरवाइज से, बिकॉज वेन एवर एनी ऑल दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज का जब एक बार स्टार्ट होगा, आई थिंक रिसेंटली ओनली पिछले बैचेस का BNY Mellon एंड नॉर्दर्न ट्रस्ट, दोनों में बहुत हाई प्लेसमेंट गया है, ठीक है? तो आई एम एक्सपेक्टिंग, कितना स्ट्रेंथ है अपना यहाँ पे, 5, 10, 13, और यहाँ पे ऑनलाइन में 16, 17, 18 आर देयर राइट एज ऑफ नाउ. 18 में से आई वांट एटलीस्ट 15 ऑफ यू सिलेक्टेड, आराम से इन द सेंस वेरी स्मूथली प्रोसेस. राउंड 1, 2, 3 ऐसा नहीं, राउंड 1 क्लियर, राउंड 2 क्लियर, प्लेसमेंट लेटर डन, एक ही बार में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर, मतलब जितने लोग गए थे अक्सा में, तो एटलीस्ट एक चीज अच्छा हुआ है कि आपको थोड़ा आइडिया तो आया कि कैसा होता है इंटरव्यू, कितना टाइम जाता है. सब्सिडियरी प्रोसेसेस का पता तभी लगेगा तब जब आप एक बार वहां पे जाओगे. यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही पता लगता है कि अच्छा कौन सा क्वेश्चन पूछा, कौन सा पूछा, बस. उसके अलावा और कुछ क्या होता है वो पता नहीं चल पाता है, ठीक है? आई थिंक आपका शायद पूरा दिन गया था ना पहले दिन, एंटायर डे. वो एनर्जी लेवल रखना ना शाम तक, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और अलोंग विद द नॉलेज जो आप पढ़ के गए हो, वो भी इंटरव्यू में जाके बोलना है. और वो जो प्रेशर दिखेगा ना, मतलब व्हेन यू सी दैट पर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी क्या होगा, प्रीवियस बैचेस, करंट वन एंड करंट वन फ्रॉम अदर लोकेशंस, सब आपके कॉम्पिटिटर्स है. यू कैन इजीली 18 लोग में ही अगर मेरे पास सिर्फ 5 सीट अवेलेबल है, तो समझ लो कि यहाँ क्लास में ही 5 लोग को सिलेक्ट करना इट्स डिफिकल्ट फॉर मी. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो प्लीज इंक्रीज द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशंस, क्योंकि अब थोड़ा गेयर चेंज करने का टाइम आ गया है, ठीक है? लेवल 1 को जितना और मजबूत कर सकते हो, सी ऐसा नहीं है कि आपका मॉक खत्म हो गया, अच्छे स्कोर्स अगर आ भी गए हैं तो वो आपका काम वहीं पे खत्म हो गया. दैट इज नॉट योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हैज टू बी शार्पनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग योर लेवल 1. क्योंकि इसे स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है कि वो मतलब 365 डेज इन ईयर देखोगे ना, तो यू विल बी हैविंग वन लर्निंग एवरी डे. इवन आज की डेट में भी मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिलता ही है, despite having spent so much of time in this all this capital and money markets. कई सारी स्ट्रेटेजीज शायद मुझे आज तक अभी पता ही नहीं होगी शायद मेरे ख्याल से, बट स्टिल वो देख के पता चल जाता है कि अच्छा ओके इस तरीके से वर्क होगा, इस तरीके से एक्ट होगा. आज जैसे ही मैंने सुबह मार्केट देखा 200 पॉइंट अप, आई वाज वेरी क्यूरियस टू बाय बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन. ठीक है, व्हाई? बिकॉज यस्टरडे सिर्फ 15 मिनट में एक कैंडल ने वो ग्रीन कैंडल बनाया था, पूरा दिन नेगेटिव था, लास्ट में किसी ने क्लोज कर दिया ग्रीन.
आज वापस ऊपर से गैप अप किया, फिर नीचे कर दिया। तो सी जितना डेस्परेट हो, मतलब वही था कि फिर लेवल जब आता है तब आप जाके बाय करते हो, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट बाय इट। ठीक है, तो वही था कि मतलब मैं कब एंट्री लूँ। पुट ऑप्शन चल रहा था कुछ उस टाइम पे 9500 के आसपास था प्राइस। ठीक है, आउट ऑफ मनी था ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे, तो मतलब सिर्फ 3 दिन बचा है एक्सपायरी के लिए। ठीक है, तो प्रीमियम से इनके जो है ना वो बहुत जल्दी फिर निकल जाते हैं, स्पेशली टुमारो, मतलब आज 1 बजे के बाद एंड टुमारो द हाईएस्ट वैल्यू इरोजन, जो टाइम वैल्यू है ना आपका, वो आज और आज दोपहर के 1 बजे के बाद और कल पूरा दिन बहुत ही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि थर्सडे के दिन फिर उतना प्रीमियम बचता नहीं है। तो नो वन इज दैट मच ईगर टू सेल दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस इन दैट केस। ठीक है, तो बेसिकली वही था, 9500 चल रहा था। एक्चुअली इट वाज रिक्वायर्ड टू क्रॉस 127, लेवल वहीं पे था क्रॉस करने के लिए। I still took desperate entry by in 110। जैसे 110 हुआ, I took an entry। जो होगा देखा जाएगा। 127 से 130.4 तक गया। ठीक है, सिर्फ 3 रुपीज ही जस्ट आगे गया। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बुक अराउंड इन 137 140। ठीक है, जैसे ही वहां पे गया, वहां से रिट्रेस किया। आई थॉट ये डबल टॉप नाम बना ले। अभी डबल टॉप क्या होता है, टेक्निकल पैटर्न है। एक बार गया वहां पे, वहां से नीचे आया, अगेन इट वेंट टू द सेम लेवल, अगेन केम डाउन। तो दैट मीन्स सम हेवी सेलर्स आर देयर। ऐसे एक डबल बॉटम होता है, डबल बॉटम इस नीचे गया, वापस वहां से ऊपर, अनदर राउंड फॉर, वापस वहां से गया, वहां से वापस ऊपर, तो नीचे बायर्स है। इसका मतलब ये होता है। हाँ, तो 130 से रिट्रेस किया वापस से 95, तो डायरेक्टली लॉस स्टार्ट हो गया मेरा वहां पे। आई वॉज जस्ट वेटिंग, लेकिन वो गिर नहीं रहा था इतना। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर वन राइट शूट। वहां से गया 169। ठीक है, तो वो पेशेंस एंड ट्रेडिंग का इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा पेपर ट्रेडिंग भी स्टार्ट करो। इमोशंस एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप तब जाके सीखोगे। अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आई वोंट बी एबल टू टीच यू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली ट्रेडिंग समथिंग। लेकिन सिंस रियल ट्रेडिंग तो अभी स्टार्ट नहीं करना है, बट जस्ट वो पेपर ट्रेडिंग का प्रैक्टिस रखो। जस्ट स्टार्ट वॉचिंग फ्यू ऑफ द चार्ट्स पैटर्न्स। टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर किसी को सीखना है, इट वोंट टेक मोर देन 2 वीक्स। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस है, कोई भी जाके वहां पे देख लो। पैटर्न बनाना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, 5 या 6 पैटर्न्स है बस, और किसी एक या दो को ही मास्टर करना है। 6 पैटर्न्स को लेके साथ में नहीं चलना है। कभी बन रही है, यू आर विजुअलाइजिंग इट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, अदरवाइज इन स्टॉक्स दिस थिंग्स विल नेवर हैपन। ओके, so start learning some other things also parallel। जनरल नॉलेज, करंट नॉलेज, करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस आर्टिकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो थोड़ा बहुत उसका ज्ञान ले लो कहीं से। स्पेसिफिकली व्हेन योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड, उसके पहले तो डेफिनेटली, उसके पहले एक हफ्ते जितने भी फाइनेंस न्यूज है ना, पुराने न्यूज कहीं से भी तो मिल जाते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट नाउ डेज। ठीक है, तो एटलीस्ट वो एक कर लो। कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तब जाके वो होगा। मनी मार्केट और फिक्स इनकम में क्या है कि एक बार खरीद लिया, फिर मैच्योरिटी पीरियड तक वेट करना है, और कुछ तो है ही नहीं उसमें। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन दिस कैपिटल मार्केट्स आर गोइंग टू बी वेरी मच टफ इन दैट केस। म्यूचुअल फंड्स वी हैव सीन, एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स, उनके कंपोनेंट्स क्या है, टीम बेस में क्या था, कैसे परसेंटेज वेटेजेस थे, क्यों इतना ही रखा था, व्हाट वाज द लॉजिक। यू विल सर्च अराउंड, यू विल, मतलब बहुत सारा कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। Now different trade confirmation transmission methods are fax, that is a facsimile machine. Telex is one of the latest applications that is also being used. Swift mode for international transfer of payments, email for communication, and of course a paper whenever you are in a meeting. So according to the counterparty's preference, you can choose the selection of the transmission media, the issuance of one or many copies। मतलब वो होता है ना, एक ऑफिस कॉपी रहता है, एक ऊपर कॉपी जाता है, नीचे जाता है, सब कुछ हर एक के पास एक एक रहता है। So depending on those copies and of course the language that is being used, just write the name of the trade confirmation transmission methods। और कोई असाइनमेंट में स्विफ्ट का पूरा नाम लेके आना कल, फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट।
अदानी विल्मा टच 700 नाउ, 300 दूर है टारगेट से, बस खत्म हो जाए फिर। Let's see. Even Adani Power is moving fast nowadays. Adani Power मेरे पास 48 रुपीज का है, 244 चल रहा है। लेट्स सी कहाँ पे जाके 500 टारगेट आया तो फिर निकाल देंगे। 48 लाइक 2 इयर्स बिफोर की बात हो रही है ये। किसका? डीमार्ट रेडी? अच्छा डीमार्ट आ रहा है उसमें, ई कॉमर्स में। वेबसाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया क्या? नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनका कुछ लॉन्च हुआ है। बट सी नाउ दिस आर वेरी फंडामेंटल पिक्स। फंडामेंटल पिक्स मतलब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक्स, उनको बेचने का कोई मतलब नहीं है कि आईपीओ लग गया। अगर नहीं भी आपको इश्यू होता है तो प्लीज मेक श्योर कि ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग बाय इट फ्रॉम द मार्केट प्राइस, और रख के भूल जाओ। ट्राई वंस, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो सिर्फ 5 लेके बैठ जाओ। ज्यादा अगर लगता है कैपिटल नहीं है, ये है वो है, तो 5 लेके बैठ जाओ, भूल जाओ। स्टिल यू विल रिमेंबर इन दैट केस। जितने भी पावर स्टॉक्स है ना, कुछ लिस्ट निकालो उसका, लेट्स सी पावर सेक्टर में कौन कौन अभी डबल डिजिट में चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे अब तो ट्रिपल में आ गए, तो अभी महंगे हो गए, उनको लेने का भी मतलब नहीं है। कभी ना कभी तो एक बार करेक्शन में, बहुत गंदा वाला करेक्शन देंगे, 30-40% डाल देंगे नीचे, फिर वापस से उठाएंगे। इन लोगों का काम ही यही है, ऊपर लेके। न्यूज चाहिए होता है करेक्शन के लिए। वो वही तो मैं उस दिन शायद, आई डोंट नो वेदर आई सेड इन दिस बैच और इन अदर बैच, कि अगर बुल है तो वो बेचारा स्टेयरकेस चढ़ के आ जाता है, बुल है तो डायरेक्टली एलिवेटर में नीचे आ जाता है। इट डजंट इवन टेक 2 days टू इरेज ऑल द गेन्स। जितना भी बड़ा है ना, 30-40% 2 दिन में निकाल देता है। बैर का पंच वही होता है। हाँ? हाँ, जितना वही तो, वो धीरे धीरे बेचारा 5-10 रुपया कितने टाइम से बढ़ रहा होगा, ऑल ऑफ अ सडन 50-60 रुपीज वाइप्ड आउट। बट न्यूज हैज टू बी नाउ। न्यूज 3-4 नेगेटिव जो चल रहे हैं वो वही है। रशिया वाला वॉर अभी खत्म हो कैसे भी करके। सेकंड वन वेरी बैड न्यूज इज इन्फ्लेशन, उसको कहीं से तो निकालना पड़ेगा। थर्ड थिंग, अभी ग्लोबली समहाउ मार्केट के जो सेंटिमेंट्स रहते हैं ना, आई एम नॉट दैट मच सिक्योर्ड एज ऑफ नाउ। इन्वेस्ट कर देता हूँ, पैसा मिल जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन एक सेंटिमेंट होता है कि अच्छा मेरा मार्केट का सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन आ जाती है कि जब तक कुछ हो ना जाए तो तब तक यू नीड टू वेट। वंस दैट हैपेंस देन यू एंटर द मार्केट। और लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जब जैसे स्टॉक जैसे अब इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, सो बेसिकली पीपल विल एंटर इनटू दैट फेज। एक्चुअली रिवर्स होना चाहिए, जब मार्केट गिरता है तब बाइंग आना चाहिए। लेकिन वही है, लोगों का वो पैनिक मोड एक्टिवेट हो जाता है और उनको लगता है मार्केट कल ही बंद हो जाएगा, सेंसेक्स जीरो हो जाएगा, निफ्टी जीरो हो जाएगा, क्या पता नहीं कैसा करते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अगर मार्केट जब बहुत गिरता है, एवरी 10% करेक्शन में म्यूचुअल फंड की एसआईपी एक बार तो हो ही जानी चाहिए, एवरी 10% करेक्शन में, ठीक है। कोई भी आपका म्यूचुअल फंड हो, इट्स गुड।
ओके क्या आफ्टरनून अरे किसका मॉक्स बाकी है आप पहली बार आए हो क्या क्लास में ये पहले दिखा था आपको क्यों गई वो बताएगा कौन दो गया था अभी कैसे कवर करोगे पता नहीं मिलके जाना लेक्चर होने के बाद किसका बाकी है ऑनलाइन में स्टूडेंट्स प्लीज किन किन लोगों का मॉक्स पेंडिंग है? ओंकार, पल्लव, राज, योर मॉक इज Hello, पेंडिंग sir. राइट? हाँ यस। हेलो सर, यस सर। तो आप कब देने वाले हो? सर मैंने उत्कर्षा मैम को मैसेज किया था, शी विल लेट मी नो। ये हो गया 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया Okay. Now see, just and Sanket, your mocks are also pending, right? No sir, done. Huh? दिए है मैंने मॉक्स। Okay. Okay, let me check. Okay. Otherwise, Samiksha, you are not coming in the class today also. Samiksha, are you there? Or किसी का रागिनी के साथ कांटेक्ट है आप में से? हाँ, वेरी शी। एक और गांव वाले सब गांव ही चले जाओ यार। हाँ, वही। अरे कितना टाइम हो गया? बिकॉज आई थिंक 31st वी हैड दिस 27 तक एग्जाम, मतलब पूरा 1 महीना चलता है एग्जाम का। इतना तो कौन सा यूनिवर्सिटी है? अरे नहीं, ऑनलाइन फिर भी ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड 27 दिन वाला चलने वाला एग्जाम कौन सा है? हाँ नहीं ना? अच्छा, आपके पास मुझे लगा डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग, जिनके लोगों के मॉक्स पेंडिंग है दिस सैटरडे कंफर्म स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे आज के आज ही, ठीक है? उसके बाद किसी के भी मॉक्स नहीं होंगे, प्लीज इन्फॉर्म हर ऑल्सो, ठीक है? दैट्स फॉर वेरी श्योर। बिकॉज क्या होता है फिर कुछ लोगों का रह जाता है तो फिर लेवल 2 का पूरा शेड्यूलिंग बिगड़ जाएगा, और लेवल 2 का मॉक्स आर ऑल्सो कमिंग नाउ, जस्ट वी इसका जैसे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? आई थिंक बाकी सब लोगों को तो हो गया है मॉक्स, दैट इज नॉट लेवल 2 में आ गए हो। अब लेवल 1 का क्वेश्चन अभी मत पूछो, डायरेक्टली यही बोल दूंगा कि इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओ। उसमें से ही पूछूंगा आपको डायरेक्टली लेवल 2 का मॉक, ठीक है? क्विज के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है? चलो।
अरे यार थोड़ा प्रोफेशनलिज्म बिल्डअप कर दो यार प्लीज। इसलिए उसको 2 बार बोला राउंड 2 में आने के लिए, और बहुत इंटरेस्ट हो गया। अच्छा मुझे एक और एचआर चाहिए, स्पेशलाइज्ड इन कम्युनिकेशन वाला, नया डिपार्टमेंट खोलते हैं इसके लिए। चलो okay, now TRAX is the mechanism. So ISM is one of the banks which is based in Zurich, is a self-regulatory organization and trade association responsible for regulating and enforcing all the rules related to the functioning of the international securities market. Okay, they have introduced this TRAX mechanism as a means of addressing all the issues related to it. So basically it is a real-time trade mechanism covering all the international traded debt and equity securities. तो किसी को कोई भी लाइव डेटा चाहिए, क्या प्राइस चल रहा है, कौन सी मार्केट से मिलेगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, एवरीथिंग विल बी मेंशनड ओवर देयर, whereby ISMA members are required to issue a message to track so as to be received by, मतलब जैसे 30 मिनट्स ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन हो जाएगा आपको कंफर्मेशन मेल पे आ जाएगा। बट नाउअडेज ऑफ कोर्स विद डेवलपमेंट ऑफ ऑल द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज ये बहुत अभी जल्दी होने लगा है, विद इन लाइक 2 मिनट्स और 3 मिनट्स एवरीथिंग इज नाउ पॉसिबल। ठीक है, क्रिप्टोस का एक ही एक अच्छा चीज जो बना है वो ब्लॉकचेन है और कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग इज नॉट ऑफ कोर्स डिवाइस इनटू दैट, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें। 24/7 मार्केट है, नो अपर लिमिट नो लोअर लिमिट, कितना भी अपर सर्किट हो सकता है, कितना भी लोअर सर्किट हो सकता है, राइट। तो मैसेज इज नॉट रिसीव्ड बाय ट्रैक्स, वो पता है ना, वो एक ये एलन मस्क ने एक बार ट्वीट किया था बहुत टाइम पहले एक कॉइन के बारे में, डॉज कॉइन तो था, उसके बाद एक और आया था शिबा, या दैट शिबा दैट थिंग। ऐसे ही प्राइस मतलब देखा कितना मैनिपुलेट हो जाता है। तो कभी कभी यही लगता है कि यूएस के फेड के गवर्नमेंट कुछ बोलते हैं और मार्केट में रिफ्लेक्शन आ जाता है। आई कैन मैनिपुलेट माई मार्केट्स इन माई वे, हो सकता है ना, जैसे पी चिदम्बरम ने किया था। नो, नो वन इज अवेयर अबाउट दैट केस, विच पी चिदम्बरम। हाँ चलो वो अच्छा पता है, ओके फॉर्मर, ओके ठीक है। हाँ, सन नेम इज कार्ति चिदम्बरम, ठीक है। तो वो कैसे करते थे मैनिपुलेट? नो नो दैट आइनॉक्स वाला, ही यूज्ड टू प्रेजेंट बजट इन द सेशन, पार्लियामेंट सेशन। तो जैसे वो हर एक सेक्टर वाइज या इंडस्ट्री वाइज कोई भी सब्सिडीज दिया, कोई पैकेज दिया वगैरह वगैरह, तो दैट स्टॉक्स आर गोइंग टू रैली। तो इन्फॉर्मेशन तो घर में ही बांट लो, पर्सन को पता, बट फाइनेंस मिनिस्टर को पता हाँ नहीं रहती है। बट एटलीस्ट व्हाट हैपेंस इज दैट पर्टिकुलर इनिशियली एक बार डिस्कशन तो होता है ना सेक्टर वाइज। सी आई एम आफ्टर ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर, तो अगर मेरे को जीडीपी बूस्ट करना है तो आई विल बी लुकिंग आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, आई विल बी लुकिंग आफ्टर डिफरेंट कमोडिटीज, कोई सर्विस सेक्टर्स। तो कुछ एनालिसिस तो होगा ना मेरे पास डेटा उस टाइप का, तो उस टाइप पे इतना तो पता चलेगा कि ठीक है इतना पैसा यहाँ से लाना है, इतना पैसा इस सेक्टर में डालना है। तो एटलीस्ट इवन इफ आउट ऑफ 10 सेक्टर्स, बोले 5 सेक्टर का कुछ डेटा सही नहीं है, 5 का अगर गलती से भी सही हो गया तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी यू विल बी मेकिंग। ठीक है, तो ये होता है। ओके, so just write at the second line, ISM has introduced the track system as a means of addressing the regulatory issues. These issues मत लिखना, regulatory issues लिखना, and it is a real-time trade matching mechanism covering all the internationally traded debt and equity securities.
Written, everyone? Okay. So this is how tracks will be working. And STO will be executing a trade with a counterparty, both of which must be ISMA members. तभी उनको live data, live जो भी है transactions करने का data मिलेगा. Second thing, both the parties will be sending their trade details to tracks to be received by tracks within the 30-minute deadline. The track system will search for the match and then apply the status, whether the data is correctly matched or not. And then the current trade status is then available to each of the parties involved. So say for example, here is a STO, here is the counterparty. The first step will be trade execution. They will be exchanging the details over here in the live mechanism mode. दोनों STO as well as counterparty यहाँ पे tracks होता है. Tracks क्या करेगा? They will attempt to match the trade details, then apply the status. So this is more of a new type of live mechanism that is being developed to ensure that there is a proper trade transaction taking place between STO and its counterparty with real-time status, with all the details correctly checked, and with all proper trade validation parameters applied. Is it clear? Just a mechanism has been established from technological perspective. Okay. So transaction reporting. Within each marketplace, a regulatory environment exists to ensure that the market is operating in a fair and orderly manner. This encompasses a number of facts of operation related to stock exchange, market members, including STO, such as transaction reporting, trading rule breaches, position taking disproportionate to the members' financial position, and what could be the other rules and regulations associated with it. It could be related to the marketplace that are designed, investor protection, interest of the members, and guardian of the reputation of the marketplace. So whenever the transaction reporting has to be done, it has to be done first of all in an orderly manner based on which all the different data and the parameters have been defined. None of the trading rules have to be breached. Third, positioning taking disproportionate. Matlab, for example, sometimes it might happen that the financial transaction that has been carried out, there will be a mismatch in the amount that has been sent just because the real-time data has been showing some different values and the agreed upon value has been something different. So you need to settle that because see ISMA में वो tracks में तो कुछ दिखा देगा कि ठीक है $20 पे आपने कुछ ले लिया forex के results, but sometimes it will be just 20.5. But considering the type of amount of quantities, it will be huge and there will be a marginal difference observed in the transaction. Okay. Of course, all the rules and regulations have to be followed. Considering investor protection, मतलब आपके जो भी clients हैं, institutional clients, उनका one of the basic objectives has to be protection of the capital account, जहाँ से वो fund करते हैं. Second, you have to work in the interest of all the stakeholders that you are associated with, whether it is related to custodian, whether it is related to the client, whether it is related to your internally working members of the organization. Okay. And finally, you need to guard the reputation of the marketplace. मतलब tracks का अगर कुछ disreputed type का कुछ हुआ या something has some fraud या something has to be taking place, it will harm the reputation of the entire transaction. Okay. Now, what is the purpose of transaction reporting? So once the execution of the trade is carried out, the stock exchange market members need to require to report to the appropriate regulator, either SEBI as well as to the senior members of the firm, so that they will be at least able to determine कि अच्छा, this trade is perfectly recognized. It is coming from genuine source of you can say a party or an institutional client. The report of the details of all the transactions needs to be undertaken. Hence, this information will allow the regulator to assess and supervise the business that has been transacted by individual companies with the marketplace. And finally, this activity is commonly referred to as supervision or surveillance. So they will be more of like acting as a surveillance agency. Okay, transaction reporting जो भी आप जिसको भी भेजते हो, they will be acting as surveillance agency. तो वो SEBI भी हो सकता है, आपका internal surveillance team भी हो सकता है, या तो काउंटर पार्टी का कस्टोडियन का भी सर्वेलेंस टीम हो सकता है. They will be ensuring या checking कि all the details are correct, all the records are perfectly matched, all the transactions have been carried out, amount transfer हो गया, shares transfer हो गए, report generate हो गया, दोनों के पास एक-एक कॉपी. ठीक है. So say for example UK based regulated firms, so who must report the transactions? तो ट्रैक्स होगा, ISMA होगा. यूरोबॉन्ड्स में आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट वाया ट्रैक्स मैकेनिज्म, एक्सचेंज मार्केट आपका ISMA एंड ट्रेडिंग इन यूरोबॉन्ड्स. कहाँ पे जाना है? क्रेस्ट में रिपोर्ट जनरेट, मतलब दूसरा जो है वो यूके इक्विटीज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज,
एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के पास आपका अल्टीमेट रिपोर्ट जाएगा। एफएसए था वहां पे, वी हैव सीन राइट, आरबीआई जैसे था या सेबी अपने यहाँ पे था, तो वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, वी हैव रिटन द फर्स्ट लेवल 1 इफ यू रिमेंबर। ओके, just draw this diagram because the process flow is important over here. कोई एचआर क्वेश्चन पूछा था क्या आपको? अच्छा, राउंड ही नहीं हुआ था। अच्छा, वो पहले हुआ था। क्या एचआर में क्या पूछा? कोई न्यूज़ नहीं अभी मेरे पास भी। अक्षता भी इज नॉट देयर इन द ऑफिस, तो एक बार आए तो कुछ आई विल टेक द अपडेट्स। आपको कोई मेल नहीं आया है ना अभी? तो शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, प्रॉबेबली। आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग इन मे। तब तक शायद आपका भी वही लेवल 2 मॉक एक बार हो जाए, तो मोर ऑफ लेस लाइक आपका 90% सिलेबस विल बी ओवर।
तो क्या है कि अगर किसी का थोड़ा अकाउंट पर्सपेक्टिव या ट्रेडिंग वैलिडेशन, ट्रेड लाइफ साइकिल, क्योंकि अभी 3 टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो एक रेफरेंस डेटा मैनेजमेंट, सेकंड इज this reconciliation of accounts, and one more topic is left. So अगर वो हो जाता है ना तो क्या है कि वो कंप्लीट पैकेज जैसा हो जाएगा आपका, फिर रिस्क मैनेजमेंट रहता है बाद में, तो दैट वो उतना डिफिकल्ट नहीं है. बट एक बार आ जाए तो ऑफ कोर्स देन आई विल बी शाउटिंग इट एवरीवन. तो ये रिस्क मैनेजमेंट अपने कोर्स में है क्या? कौन सा? सर ये रिस्क मैनेजमेंट? हाँ है ना. अच्छा अच्छा. ओके. ना मैं फिर भी ठीक है. कल रात को 10:30 मुझे एक व्हाट्सएप पे आया कॉल ऑप्शन का स्ट्रेटेजी बेच के, ऑप्शन का दूसरी बैच में से है. 10:30 बजे उसने उस रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन सेल किया, डायग्राम ड्रॉ किया. सर ये सही है क्या? सर ओके, आई विल लेट यू नो टुमारो. 10:30 बजे मैं कहाँ पे आपको रिप्लाई करूंगा ये रात को. आई वाज आल्सो लाइक, मुझे लगा कुछ अर्जेंट होगा कुछ, तो बुक में लिखा है रिलायंस 2500 कॉल ऑप्शन बाय, रिलायंस 2700 कॉल ऑप्शन सेल, और वो ऑब्स्ट्रक्ट का डायग्राम ड्रॉ किया है. ठीक है चलो. बट एटलीस्ट ऑब्स्ट्रक्ट की वेबसाइट से वो थोड़ा भी आइडिया आ जाना चाहिए कि ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितना मार्जिन चाहिए हमको, कितना लाइक व्हाट विल बी माय ब्रेक इवेंट्स. अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझो आपका ऑप्शन इज डन. ठीक है. फिर फ्यूचर्स का तो ऐसा है कि यू आर जस्ट बाइंग इट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रोल ओवर पर्पस, unless and until I am having a very clear technical reading or any news of that stock कि वो स्टॉक बढ़ेगा, तो फ्यूचर को लेके कॉल ऑप्शन हेज कर दो. सिंपल थियरी. फ्यूचर को कभी सेल नहीं करना है आपको. फ्यूचर यू हैव टू बाय एंड हेज इट विद द कॉल ऑप्शन, आइदर एटीएम और ओटीएम. ठीक है. तो क्या होता है उसमें, अगर ऊपर नीचे बहुत भी नहीं हुआ तो द टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज गोइंग टू गिव यू द मनी फॉर द एंटायर मंथ. ठीक है. इंट्रिंसिक वैल्यू चाहे भले इतनी ही रहे, अगर कहीं पे घुमा नहीं है बहुत सारा, अगर घूम जाता है बहुत पॉजिटिव चला गया, तो इन दैट केस आपको फिर भी बेनिफिट है. व्हाई? बिकॉज यू आर हैविंग द फ्यूचर. तो फ्यूचर विल मूव फास्ट कंपेयर टू ऑप्शंस ऑलवेज. ओके. उसका इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता है लेकिन टाइम वैल्यू नहीं बढ़ता है उतना स्पीड से. एंड लास्ट थर्ड केस में क्या होगा कि अगर बैरिश हो गया मार्केट, मेरा फ्यूचर माइनस में चला गया, तो कॉल ऑप्शन तो वैसे ही जीरो होने वाला है, आउट ऑफ मनी हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट वहां पे हेज हो गया पूरा. तो इन दैट केस ऑल्सो यू आर गोइंग टू बेनिफिट. तो ऑलवेज बेस्ट स्ट्रेटेजी ज्यादातर वही होती है कि बाय फ्यूचर एंड सेम अमाउंट ऑप्शंस यू हैव टू सेल. ओके. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैश इक्विटीज में उतना खरीद लेते हैं, उनको वो रोल ओवर नहीं चाहिए. इट्स एक्सपेंसिव फ्यूचर, टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा लगता है. तो फॉर एग्जांपल 250 इज द लॉट साइज ऑफ रिलायंस, तो 250 कैश इक्विटीज में बाय करेंगे रिलायंस को और ऑप्शन सेल करेंगे. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं. ओके. Then transaction reporting. So those who must comply with the transaction reporting requirements are UK-based regulatory firms, including STO. Transaction reporting by the STO may be achieved through different methods according to the type of security and exchange market in which the trading has been conducted. Example, Eurobonds as opposed to the UK equities. Eurobonds have been traded under the rules of ISMA, or where UK equities have been traded over the London Stock Exchange, then the following rule applies. TRAX is also used as a mechanism for transaction reporting of Euro bonds, and CREST is used for transaction reporting of the UK or Irish equities. Okay. Once all the trade details have been received by ISM and CREST, they are forwarded to the destination. तो reporting कहाँ पे होगा? अगर bond है आपका तो TRAX mechanism, equities है तो आपका CREST mechanism. ये जो हमने देखा था ना यहाँ पे CREST वाला, London Stock Exchange में आपका equities का डेटा जाएगा, मतलब जो भी आपका है CREST में वो रिकॉर्ड हो जाएगा. अगर bonds वगैरह है तो TRAX में रिकॉर्ड. All those reports will be going to FSA. They will be cross-checking and informing okay, trade is validated, confirmed. It will again back go to the concerned STO as well as its counterparty. Okay. Now, when a regulator detects any trading activity that is doubtful, an investigation will begin involving the security of the transaction executed by the stock exchange member in the specific security. It may also include the inspection of the exchange or the market members' books of accounts and records and interview with the members person. अगर कुछ fraud detect हुआ, doubtful transaction detect हुआ, directly FSA will intervene in this case. They will be even inquiring the person who is involved. मतलब हर्षद मेहता टाइप ही हो गया पूरा.
कि कुछ dubious देखा books of accounts में, they will be directly cross checking all the data and they will be even interviewing the concerned person. Okay. Now last one is the settlement instructions. Settlement instruction is the term used to describe the mechanism by which the trade settlement will be initiated between seller and the buyer. For all the trades, an STO will issue the settlement instruction to the custodian of the counterparty. The term custodian is used within this book as a generic term for many types of organizations. Settlement instructions are normally generated by and transmitted from STO to the counterparty. The destination being the appropriate custodian to be selected, of course, from the range of STO custodian depending upon the security. So basically, settlement instructions will be done once and only once the trade is validated and verified. It will be transmitted from STO to the counterparty, but to the custodian of the counterparty, not directly to the counterparty. Okay, they will be stating in the settlement instructions that now the trade is verified and validated. Please transfer the funds and then we will transfer the shares. This is the settlement instruction. Is it clear? ये जा रहा है ऊपर से, हाँ समझ में आ रहा है क्या? What is settlement instruction? नहीं वो पीपीटी छोड़ दो, उसके अलावा बोलो. हाँ कैसे? वैसे इंटरव्यू में बोलोगे तो फिर कुछ नहीं होगा. हाँ यस, एनीवन फ्रॉम दिस साइड? व्हाट इज सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन? Okay, okay. Okay, what all details will be, what all details will be checked and verified? What will be the different details that will be verified in the settlement instruction as well as in the trade validation? None? एक भी डेटा तो बोल दो, कोई भी, इतने सारे डेटा फील्ड्स देखे हैं. हाँ हाँ करेक्ट. नहीं समझ में आ रहा है? नहीं. हाँ हाँ यस यस. नॉर्मल एक रिसीट, हमने एक एग्जांपल तो देखा था कि ट्रेड डेट होगा, वैल्यू डेट होगा, प्राइस होगा, क्वांटिटी होगा, एक्सचेंज रेट होगा, काउंटर पार्टी कस्टोडियन, अवर कस्टोडियन, रेफरेंस नंबर, एवरीथिंग हैज टू बी देयर इन दैट रिसीट. दैट रिसीट विल बी ट्रांसमिटेड मतलब शेयर किया जाएगा कि अगर देख लो सब डेटा सही है ना. अगर डेटा सही है तभी जाके हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे. ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग मतलब आप पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और उसके बदले में मैं शेयर्स आपको ट्रांसफर कर दूंगा. दैट इज वैलिडेशन. वैलिडेशन इज कंप्लीटेड, देन सेटलमेंट विल कम. वंस द सेटलमेंट इज डन, इट नीड्स टू बी चेक्ड दैट इन द केस ऑफ द नेट सेटलमेंट एक्सचेंज रेट भी सही डाला है, अमाउंट भी सही डाला है. अगर नहीं है देन योर ट्रांजेक्शन विल बी कैंसल्ड. इफ इट इज नॉट कैंसल्ड एटलीस्ट इट विल बी हॉल्टेड. फिर वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जाएगा आपके टीम लीडर के पास या आपके कस्टोडियन के पास कि कहाँ पे एरर आ रही है. अगर कोई एरर ऐसी है कि जो मतलब रेक्टिफाई नहीं हो सकती है तो ट्रेड कैंसिल हो जाएगा. अगर सही है, कुछ मैनुअल एरर था, ह्यूमन इंटरवेंशन एरर था, एक जीरो ज्यादा डाल दिया या 10% की जगह 12% लिख दिया, यू नीड टू जस्ट मॉडिफाई द ट्रांजेक्शन शीट, वापस से भेजो ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के लिए. वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगा. अभी क्लियर हुआ? एनी डाउट? प्लीज रिमेन लिटिल बिट एक्टिव. ठीक है, ओके. Now settlement instruction types. First one is the delivery versus payment and second is free of payment. So delivery versus payment is the simultaneous and irreversible exchange of the security and cash. And here the trades are due to settle on a DVP basis. So it's more of like a normal to issue a single settlement instruction to the relevant custodian. And in the case of free of payment, the movement of securities and cash between buyer and seller is disassociated. Settlement is known as FOP. So basically delivery versus payment में क्या होगा? एक हाथ से लो, एक हाथ से दो टाइप.
सिंपल, पैसा भेजो, शेयर्स ले जाओ। फ्री ऑफ पेमेंट में ऐसा नहीं होगा। Either the payment will be done first or the shares will be transferred first. We don't know whichever is the transaction. दोनों एक साथ नहीं होगा। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, we are doing the transactions at the same time, the cash of delivery versus payment, and in the case of FOP, the payment will be not considered first. Of course, the shares will be transferred and the payment will be done in the future. That is why it is known as free of payment. Okay, please write this down. Types of settlement instructions. Done. Ready? Content electronic connection setting. Okay, let's do one thing. आज इतना ही रखते हैं. Settlement we will be taking it tomorrow. ठीक है? And then we will be starting either with reference data management or either we will be starting with reconciliation. Let me just have a check at it. ठीक है? देख लेते हैं. Online students, we are closing this session now because I think the settlement instructions we will be taking it tomorrow, and then we will be starting with the fresh chapter. Okay. Any doubts till now? Omkar, Raj, Sanket, any doubts? No, sir. No, sir. Okay. और हाँ प्लीज एंड प्लीज हो सके तो अगर किसी को ट्रेड साइकिल का कोई अच्छा वीडियो मिले यूट्यूब पे, प्लीज शेयर इन द ग्रुप. ओके. और अकाउंट्स का थोड़ा भी स्टडी प्लीज स्टार्ट. आपने भेजा था ना वो ग्रुप में इमेजेस और वो फाइनल अकाउंट वाला. प्लीज एटलीस्ट हैव अ लुक बिफोर वी स्टार्ट दिस अकाउंट्स वाला चैप्टर, बिकॉज थोड़ा नॉलेज चाहिए होगा उस टाइम पे.
फिर वहां पे जाके बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, प्लीज डोंट आस्क मी। ओके, अभी से बता रहा हूँ, थोड़ा कुछ उसका रिवाइज करके आ जाना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वाइज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री वाइज। थैंक यू, क्लोजिंग द सेशन देन।